This is Akashvani. We now bring you a radio report on the 54th International Film Festival of India being organized in Panaji, Goa. चलती फिरती हंसती बोलती नाचती गाती तस्वीरें The 54th International Film Festival of India is on a roll in scenic Goa. Today is the third day of the Gala Film Festival, where viewers are treated to a variety of films from across the globe that bring forth varied voices, vibrant cultures, diversities, and sheer cinematic excellence. Along with its glitz and glamour, there is a great sharing of ideas from some of the greatest minds in the film industry. Here's Saish Deshpande with his take on today's films in the Indian Panorama section. इफ़ी का चौथा और स्क्रीनिंग का आज का तीसरा दिन। भारतीय चित्रावली प्रभाग में आज दक्षिणी सिनेमा का जादू छाया रहा। सुबह के सत्र में मणिरत्नम द्वारा निर्देशित पोन्नियन सेल्वन पार्ट 2 की स्क्रीनिंग हुई। ये फिल्म कल्कि कृष्णमूर्ति की नॉवेल पर आधारित है, जिसमें विक्रम, ऐश्वर्या राय और त्रिशा जैसे स्टार एक्टर्स शामिल हैं। स्क्रीनिंग के पूर्व इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर रवि वर्मन का सम्मान किया गया। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में आज दर्शाई गई 1947 ब्रेक्सिट इंडिया। और शाम के सत्र में फीचर फिल्म विभाग में पैक्ड ऑडियंस के सम्मुख मम्मूटी कंपनी फिल्म्स द्वारा निर्मित कादल द कोर इस मलयालम फिल्म का प्रीमियर हुआ। मम्मूटी के चाहने वालों के लिए इस इफ़ी में ये बड़ा कलात्मक तोहफा रहा। स्क्रीनिंग के पूर्व मुत्तुमणि सोमसुंदरन, चेनु चांदनी, सुधीर कोइकोड तथा सहायक निदेशक मृदुला देवी, इन सब का सम्मान किया गया। मुत्तुमणि सोमसुंदरन तथा चेनु चांदनी से हमने बात की। We are with the cast of Kadal, which premiered today at the IFFI in the Indian Panorama, and we have two gorgeous artists talking to us. Hello and welcome. Hi, thank you. This is Chinu Chandni, and hello, this is Muthumani this side. I'm also part of Kadal movie. How was the feeling when you saw Kadal premiered here at IFFI 2023? I think it's been a magical experience. First of all, to be able to be here at IFFI as one of the participants and to bring your movie here. We don't have the entire crew and cast with us, but to be exceptional, to be chosen to be able to come here and experience it is quite something. It's quite unreal for me, honestly. And the audience reaction was so much. It was a house-packed audience. So what do you feel about it? It's such a wonderful feeling to see a house-packed audience, and this is happening in the state of Kerala. Also, the movie got released today there in Kerala also, so you're getting con calls from all over the state, and now the direct reception and the response from the crowd makes it all the more exciting. And since you spoke about the direction part, how was the preparation? There was director of Geo Baby, who's done the Great Indian Kitchen, and his writers Paulson and Adarsh. Both of them did a lot of homework, understood family court dramas. They've spoken to people from the community extensively, and they've made a very sensitive portrayal throughout the movie. So their homework was much, much larger than the kind of homework we as actors had to do. Any special training? Because this issue is also different. See, basically for artists like us, they've given us clear clarity about what they want from this particular character. So our responsibility was to deliver whatever is being asked to us. And plus, it was a sing-sound location, so all of us were there on time. I mean, in the space, totally and completely. That pulls us into the location and the vibe and the scenic arrangement in a faster pace than the movies which is not sing sound. But again, this movie particularly is a very prepared by a closely knit group of technicians and artists together, and it was a really wonderful feeling to be a part of such wonderful team.
who was working towards a movie with a cause. One final question. Usually, Joe Baby's movies are all women oriented, but with Mammootty sir, the actresses, how much footage do they get? I think in Geo Baby's movies, it's not about the footage you get as an actor or an actress. It's his movies are about human beings and the basic core of what it is to exist as a human being. So in terms of Kadal, that's the footage. The existence, the idea of a human existence is what gets footage in this film. Thank you so much. Thank you. भारतीय चित्रावली विभाग में आज ये 2 साउथ इंडियन फिल्में छाई रही। Old Indian classics have been restored using the latest digital techniques and have been showcased in this IFFI. Velma gives us more information. The world's largest film restoration project is taken up by the National Film Heritage Mission. It has embarked on a journey to restore iconic Indian classics. Much like making of a film involves a dedicated group of people, the task of preserving films is commitment to safeguarding the original artwork. At IFFI 54, Restored Classics feature 7 world premieres of classic restorations done by NFDC, NFAI under the National Film Heritage Mission. The 1964 restored classic Hakikat was showcased tonight. This Indian Hindi language war drama film was produced and directed by Chetan Anand. The film stars Dharmendra, Balraj Sahni, Priya Rajvansh, Sudhir, Sanjay Khan and Vijay Anand in major roles. The music of the film is composed by Madan Mohan and the lyrics of the songs are by Kaifi Azmi. उसने बुलाया होगा The film is based on the events of the 1962 Sino-Indian War about a small platoon of soldiers in Ladakh pitched against a much larger adversary. However, the film is not only a representation of war but a dramatic retelling of the impact war has on the common soldier. Here is G. Sham speaking to Ketan Anand, son of the director चेतन आनंद। क्लासिक्स उसमें कई फिल्में हैं, उसमें से एक जो है हकीकत भी है और वो आपके पिताश्री की बेहतरीन भारतीय फिल्म की या यूं कहिए कि फिल्म इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। देखो क्लासिक होते हैं, चाहे वो हकीकत हो या आलम आरा हो तो या आदमी हो या मदर इंडिया हो। हिमालय फिल्म्स और नवकेतन फिल्म्स, तो इसमें जो नवकेतन में जो केतन है वो आप ही हैं। मेरी पहली फिल्म मेरे बैनर में नहीं बनी थी, मेरा कज़न ब्रदर है शेखर कपूर, उनकी मदर मेरे पिताजी की बहन थी शीला कांता। अब मैं ये देव साहब का वेब सीरीज़ करूँगा और फिर हकीकत 2 अनाउंस कर दूँगा। We also got an opportunity to speak to a foreign delegate, James Harper. I mean, it was like such a classic film of like the past, and it's like really immortal, I think, in like my opinion. I really like watching these kind of classic films that are restored to be watched like by today's generations. Like especially Hakikat was really great because it kind of inculcates those values of like patriotism, and it shows people how they should live their lives. I hope like many other delegates come and watch like this great restoration of this film. It was incredible. Thank you so much, James. Enjoy your stay in Goa. Thank you so much. That's all in this segment of Restored Classics for tonight. Rajesh Bhatt spoke to Vikas Kumar, actor from the web series Arya. अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हूँ, ये मेरा दूसरा साल है। पिछले साल आया था, अब मैं एक्टर हूँ ही, छोटा मोटा प्रोड्यूसर भी बन गया हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पिछले साल मैं प्रोड्यूसर्स वर्कशॉप ये लोग करवाते हैं 5 दिन का, जो बहुत ही सहायता करता है समझने में कि प्रोडक्शन में होता क्या है। 5 दिन में आप सब कुछ तो नहीं समझ सकते, लेकिन हर तरह के मेंटोर होते हैं यहाँ के बाहर के, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग के हिसाब से। पिछली बार ऑफ कोर्स कई दोस्त बने जो उस बैच का हिस्सा थे। बाहर लोगों से मिलने का मौका कम मिला क्योंकि पूरे दिन हम वर्कशॉप में बिजी रहते थे, पर मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत अच्छी जगह है लोगों से मिलने की। इसी कारण मैं अभी इस साल दूसरे साल भी आया हूँ
और घुसते ही 3-4 लोगों से मिल लिया जिनके साथ अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। कुछ बहुत पुराने एसोसिएशंस मिले, 10 साल बाद मिल रहे हैं। और होता यह है कि बम्बई में हम सब मसरूफ़ हो जाते हैं अपने अपने काम में, तो यहाँ पर इत्मीनान से बैठ के चाय पीते हुए, खाना खाते हुए वी कैन कैच अप जैसा कहते हैं। और गोवा है तो फिर इससे बढ़िया जगह क्या हो सकती है। तो समुद्र किनारे हैं, नज़ारे का मज़ा लीजिए, अच्छी कंपनी का साथ हो और इसी बीच थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए, तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। आर्या के बाद अब आगे आपका क्या प्रोजेक्ट आने वाला है? एक अभी ताज़ा आई है, 1 महीने पहले ही, काला पानी एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पर। मैं खुद कह रहा हूँ लेकिन बहुत अच्छी है। जिन्होंने देखा है वो आपको बता देंगे, जिन्होंने नहीं देखा है वो देखें, नेटफ्लिक्स पर है। बहुत अच्छा किया है, लोगों ने बहुत अच्छी तरह रिसीव किया है और मेरे कैरेक्टर को भी थैंकफुली आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट फॉर दैट कि लोगों ने बहुत पसंद किया है। मैं एक बोकारो से सीधा साधा आदमी है, संतोष सावला, उसका किरदार मैंने निभाया है, जो अंडमान जाता है अपनी फैमिली के साथ और वहाँ पर हम सब जो भी अंडमान में उस वक्त हैं फंस जाते हैं। कुछ होता है वहाँ पे, एक पैंडेमिक सा सिचुएशन, और फिर वहाँ से फाइट है सबकी सर्वाइवल की। तो संतोष सावला की भी, मतलब मेरे किरदार की, खुद के सर्वाइवल के लिए और फैमिली की सर्वाइवल के लिए वहाँ से जो भी लड़ाई है उसके बारे में है। Here's Priyanka Mayapur with her conversation with Manipuri director Dr. Meena Longjam, whose film was the opening film in the non-feature film section of Indian Panorama. This is Priyanka Mayapur in conversation with Dr. Meena Longjam, the director of Andrew Dreams, which is the opening film in the non-feature section under the Indian Panorama at this year's IFFI. Dr. Longjam is also the first woman filmmaker from Manipur to bag the national award. Congratulations, ma'am. Welcome to IFFI. Yeah, thank you so much. I'm really thrilled and excited to be here at IFFI 54, and I've come here after 7 years, and I'm really, really excited. It's all same, and it's all the buzz and all the vibe. It's just amazing to be here. That's lovely. Can you tell us a bit about the film, and is this based on a true story? Yes, it is indeed based on a true life. Yeah, toured and we and feel that it is definitely really on a person who came with me here in IFFI 54, definitely on a true story of a woman like Libby, who runs a football club and who's been struggling for more than 20-30 years to build this club up, and yeah, she's doing some amazing and very commendable work. So I happened to meet her, and then I felt that I should do this story, and yeah, I'm really happy that story is finally out, and I have come here to screen the film, and we're all here at IFFI 54. So nothing happier than this. Thank you so much. As a woman filmmaker, what are the challenges that you had to come across and overcome? I mean, as a woman filmmaker, the thing is, woman, like I'm a single mother, I have 2 kids, so parenting become quite a task because as a documentary filmmaker, you have to move around a lot, and sometimes you have to stay far away from home, live with a protagonist subject to understand her, to even follow her. So sometimes there are some incumbent situations where you have to compromise a lot, but the feeling that you're doing something out of love and out of positive thinking that this really going to help pick our society up, so I think that kind of thing make it easier for me. Yes. One message that you'd like to give to our listeners that they could take away from this film? Please believe in yourself and believe in your dreams, and don't get bogged down by anything, and always believe in yourself. That's what I want to say. Yeah. Here's G. Sham with Harilal Bhanushali, the producer of the animation film The Light. तो सबसे पहले बीके हरिलाल भानुशाली जी, हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी फिल्म के बारे में, जो एनिमेटेड फिल्म है, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने जो पूरे विश्व में करीब 10,000 शाखाओं से सेवा कर रही है, उनके संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा के जीवन पर, इस फिल्म आधारित जीवन पर यह फिल्म का निर्माण करने में आया है। ये इसीलिए फिल्म बनाई गई थी कि महिला सशक्तिकरण का विषय आज जो समाज में और विश्व में चल रहा है वो करीब 5-10 साल से, किंतु इनके हमारे संस्थापक ने आज से 85 ईयर्स आगे अपना सब कुछ माताओं बहनों को न्योछावर करके इस संस्था की स्थापना की, जो आज सारे विश्व में सेवा कर रही है। महिला सशक्तिकरण का विषय लेकर साथ में हम दुनिया में कैसे सुख और शांति को कर सकते हैं,
उनका भी पूरा मेडिटेशन के द्वारा ये संस्था सिखाती है। फिर फिल्म के निर्माण का उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से इस संस्था के संस्थापक ने अपने जीवन दरमियान संघर्ष करके इस संस्था की स्थापना की और विश्व में आज ब्रह्मा कुमारी वो सारे संसार की सेवा कर रही है। ये दिखाने के लिए, इसका परिचय कराने के लिए हमने एनिमेटेड मूवी का निर्माण किया हुआ है। हम और एक सिद्धांत को मानते हैं कि किसी का डुप्लीकेट कोई नहीं हो सकता। हमारे पिताश्री ब्रह्मा का डुप्लीकेट कोई नहीं है, इसीलिए हमने एनिमेशन विषय को चुना हुआ है। एनिमेशन का सारा कार्य आई रियलिटी स्टूडियो बॉम्बे ने किया है, जो आपको जाने माने प्रसाद सर जो है वो उनके मालिक हैं और उन्होंने भारत की सबसे बड़ी फिल्म 4 साहिबजादा का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। तो हमारे फिल्म में भी आप उत्कृष्ट एनिमेशन का देख सकेंगे। इसके अलावा इसका पूरा निर्देशन सुजीत सरकार ने किया हुआ है। ये लोग हमारे से अपने भावना से जुड़े हुए हैं और इसीलिए सुंदर में सुंदर और संपूर्ण एक नया संदेश देने वाली ये फिल्म बनी है। मैं आप सभी दर्शकों को, सभी मेरे सुनने वालों दोस्तों को मैं जरूर कहूँगा कि इस फिल्म को आप देखें और इससे समाज के लिए संदेश लेकर जाएं। Rajesh Bhatt gives his report on the films shown today in the competition section. इफ्फी 2023 के तीसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कैटेगरी में दिखाई गई फिल्में थी इजरायली फिल्म द अदर विंडो, जर्मन फिल्म मेजर्स ऑफ मेन, रशियन फिल्म हॉफमैन्स फेरी टेल्स और इंडोनेशिया की फिल्म एंड्रोगेजी। इजराइल की फिल्म निर्देशक माया राइब द्वारा निर्देशित फिल्म द अदर विंडो 34 वर्षीय एक युवती की कहानी है जिसके प्रेमी की अचानक मृत्यु के बाद उपजी मनस्थिति को इसमें दर्शाया गया है। दूसरी फिल्म जर्मनी के लार्स क्यूमे द्वारा निर्देशित मेजर्स ऑफ मेन थी। 19वीं शताब्दी के अलेक्जेंडर हाफमैन की ये कहानी है जो कि एक ट्रांसलेटर केशिया की सहायता से हेरेरो और नामा जनजाति के बारे में अध्ययन करते हैं। नामीबिया के एक एक्सपीडिशन के दौरान उसने अनेक अत्याचार देखे। नैतिकता और महत्वाकांक्षा के द्वंद्व के बीच कहानी आगे बढ़ती है। हाफमैन्स फेरी टेल रशियन फिल्मकार टीना बर्कलाया द्वारा निर्देशित है जो कि सन 2000 के सोवियत युग के विघटन के बाद एक डरपोक युवती नादेजदा के इर्द गिर्द घूमती है। नादेजदा का विवाह विटेली से होता है जो उसका शोषण करता है। नादेजदा दोहरी नौकरी करती है, फिर उसकी जिंदगी में एक व्यक्ति आता है जो उसे एक नई पहचान देता है। आज की अंतिम प्रतियोगी फिल्म थी जकार्ता में जन्मे इंडोनेशियाई निर्देशक रेगोस भानुतेजा की फिल्म एंड्रागोजी। एंड्रागोजी एक स्कूल टीचर प्राणी की कहानी है। एक खाद्य विक्रेता के यहाँ उसके आपा खो देने का एक वीडियो वायरल हो जाता है। सोशल मीडिया पर उसके टीचिंग जॉब के लिए उसकी योग्यता पर अनेक प्रश्न उठाए जाते हैं। इन चारों फिल्मों ने यहाँ सिने दर्शकों को खासा प्रभावित किया है। Finally, here's Brian Mendonca with what's coming up tomorrow. The weekend's here. Well, almost. The first and last weekend of IFFI 54 here in Goa. Let's look at what Friday brings tomorrow. In the international competition category, we have Bosnian Pot, a film from Croatia. When a writer is asked to prove his artistic credentials to avoid being deported, he falls back on a theatre group to stage his play. Festival Kaleidoscope features exceptional films from veteran filmmakers, emerging powerhouse talents and critically acclaimed hits from reputed international film festivals of the year. In Conversation brings you 2 exciting sessions. In the first, listen to a discussion on crafting compelling web series for OTT. Speakers include Manoj Bajpai, Rita Nidimuru and Krishna DK, Apurva Bakshi and Shri Krishna Dayal. In the second session, titled Dazzling the Screen, we get a glimpse on how costume design, production design and makeup give the film that particular nuance. In Conversation are Dolly Aluwalia, Vaishnava Reddy and Pritishil Singh D'Souza. In the Cinema of the World category, there is a lot of fare to be enjoyed. Rita Lopez aspires to sainthood. To achieve this, she stages a miracle in the Argentinian film Chronicles of a Wandering Saint.
step into the world of amateur rock bands in Family Album, a film from Uruguay. Commemorating the struggle for independence in Morocco in 1955 is the film Fez Summer 55. If you are looking for eccentric characters, make a beeline for the German film Frankie 5 Star. This is a love comedy in which Frankie falls for her friend's boyfriend. The Kazakh film Goliath features a man caught between the desire for revenge and his abhorrence for violence. Catherine Corsini directs the French film Homecoming. He Thought He Died from Canada is a meditation on the nature of art with the plotline of the painter planning to steal his own works of art from the museum. In the Indian Panorama non-feature section, we feature the documentary film Changing Landscape, which focuses on the destruction of wetlands near the sanctuary. And that's all from the desk. Happy viewing from Goa. We hope you enjoyed listening to this IFFI report as much as we enjoyed bringing it to you. We are going to be there on the field tomorrow as well and will bring you all that is happening in the filmy world. Till then, it's goodbye and good night from all of us here in Panaji, Goa. चलती फिरती हंसती बोलती नाचती गाती तस्वीरें दुनिया के सब रंग दिखाती रूप दिखाती तस्वीरें पर्दे पर सब राजों से पर्दे को उठाती तस्वीरें वो दिल बहलाती कभी हंसाती कभी रुलाती तस्वीरें ये हिंदुस्तानी सिनेमा ये मूवीज ये फिल्में रहती है करोड़ों के दिल में भारत के सिनेमा की है जय जयकार